Good evening, everyone. Good evening, Pratik. Don't worry, we are here. So, I hope I'm audible, visible, and the sheet is visible as well. Everyone, cool. So, let us start then. First, gene editing. Gene therapy we're discussing. So, first, for that, we have to understand a bit about genes, the DNA and all. So, we know this is how your DNA looks: double helix, single helix. Basically, a DNA is nothing but an extension of nucleotide. It's from science and tech syllabus. Gene is nothing but an extension of nucleotide. Nucleotide which is composed of sugar and a phosphate group. Of course, element there. Sugar, deoxyribose or oxyribose. Sugar. So nucleotide, the helix that you see, this helix is basically is nucleotide, which is composed of sugar like deoxyribose and a phosphate group. And between these you have these lines. These lines are basically known as bases. So bases we have two types. One is purines, another is pyrimidines. Purines and pyrimidines. So this is purines and pyrimidines are like sugar. Just for example, you have here adenine and purine, also known as A and G. What are purines? They are two carbon nitrogen rings. Well, they are two rings of carbon like this, basically. In a side pyrimidines, you have cytosine and thymine, also known as C and T. They are basically one carbon nitrogen. बस इससे ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए. This is at most UPSC expect you to know, because UPSC does not ask technical question into technicality. It asks question more linked to science and tech, but more to relevance to the problem. Something that you can analyze in context, for example, human security, food security, your water security, these kind of issues. They are more UPSC more inclined to ask them. For interview में तो कतई नहीं पूछा जाएगा until unless you have, for example, you have done bachelor's in physics and biology, whatever, then they may ask. Otherwise, it's virtually impossible that they will ask such trivial questions, be it in prelims, be it in mains, or even in interview. At most, if required, they may ask, but that too, they will ask you to answer in general terms. You कभी नहीं पूछेंगे what is purines. Never. At most, they can ask what is DNA. Prelims, I'm saying, in that you have to write question होगा. It's a chain of nucleotide. The option, right option. बाकी 10 तरह के ऑप्शन होंगे. Chain of it is a chain of sugar, it is a chain of phosphate. इस तरीके से. Details हाँ उसी की बात करेंगे अभी हम. वी आर जस्ट डेवलपिंग बेसिस हियर. सो डिटेल्स नहीं पूछी जाती इस तरीके से. टेक्निकल डिटेल्स नहीं पूछी जाती दैट यू हैव टू नो एवरीथिंग कि व्हाट इज शुगर, शुगर में डीऑक्सीराइबोज, व्हाट इज फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डीऑक्सीराइबोज, हाउ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द चेन. नो. क्लियर है सबको? हाउ मच डिटेल यू रिक्वायर, दैट्स यूपीएससी. यू नीड टू नो व्हाट इज नॉट टू बी स्टडीड. स्टडी करने को इतना मटेरियल यू विल बी ड्राउन, इतना कंटेंट है. और you need to know what should not be studied. तो इससे ज्यादा डिटेल मत जाइए. DNA double helix composed of nucleotide. Nucleotide is composed of sugar, that is deoxyribose, and phosphate group. And in between you have bases. There are two kinds, purines and pyrimidines. That is AG, CT. Done. अब how nucleotides are formed, I told you, the combination of sugar and phosphates. Exactly how they link, उसमें फिर हम बिल्कुल केमिस्ट्री में चले जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ऑल पे चले जाएंगे. वो नहीं करना. You don't need to understand hydrogen bonding, how it works. फिर आपको पूरी केमिस्ट्री पता होनी चाहिए. What is covalent bond, what is ionic bond, how hydrogen bonding is formed. बात समझ रहे हैं शुभम? इतना डिटेल नहीं करना है बिल्कुल. यूपीएससी परवाह नहीं करता और आपको भी नहीं करना. इट्स वेस्ट ऑफ टाइम. इससे ज्यादा डीएनए के बारे में डिटेल नहीं चाहिए. सबको समझ में आया? व्हाट इज डीएनए? डबल हेलिक्स.
Double helix composed of nucleotide, which is basically addition of sugar combines with phosphate. It forms nucleotide, which is your helix, and in between you have bases. The two kind, purines and pyrimidines. Purines may be understood Ag. Purines are adenine and guanine, and pyrimidines are C and T. More than sufficient. At most, if you require, you can know what is purines. 2 carbon nitrogen ring base. Brought learn this, done. Pyrimidines, 1 carbon nitrogen ring base, done. Nothing more than this. I hope everyone understood. अब बात करते हैं news की. So this was some basics of biology which I have listed here in detail. So you can do it by yourself. Say for example, purines are adenine, guanine. The 2 carbon nitrogen ring. Pyrimidines are cytosine, thymine, 1 carbon nitrogen ring. Nucleotides basically is a composition of your purines. Sugar and phosphate group. Then you have DNA. DNA is double helix. DNA is like this, double helix. You have a single helix like this. So this part I can say this is RNA. And what is the function is important. But you need to know basic difference between DNA and RNA. DNA basically contains the genetic material, the information about you, how you are born, how you are made, your body is made. For example, if a virus enters in your body, every body reacts differently. That reaction depends on your DNA. What your DNA talks about you, what kind of features it gives you. And based on DNA, RNA understand. इसे ऐसे समझिए, for example, the sheet that you are seeing, it is basically a DNA. ये line है. All these lines are basically lines of DNA. So the way I am reading this DNA and then making you understand. So what I am doing is what RNA does. RNA reads a DNA to understand what it should do. Basically what it does is it creates proteins. बात समझ में? DNA talks about what should be there. RNA reads your DNA. Based on that, it creates protein. अब protein बहुत प्रकार के होते हैं. Enzymes are also a protein. Protein basically virtually everything in your body is largely. यहाँ तक सबको clear है? Basics, very basics of biology. Any question? Basics में only. अब आते हैं मेन चीज पे जो यूपीएससी केयर्स अबाउट. लेट्स लुक एट दैट पार्ट. So what has happened is recently there was a news that a new technology has been born, a new cancer therapy developed by the scientists from the United Kingdom. Recently reported success in teenage girl Alicia. Name of course is not important. Even this UK is not important. All you need to remember, a new cancer therapy has been developed. And then a natural question must come to your mind, a UPSC mind. The question must be, what is this? The question that naturally comes to your mind is your inquisitorial mind, a mind which try to explore things. That's what UPSC demand. As soon as you read this word, new cancer therapy, you need to know what is this. Second, how it is different from the old one. Third, where it is used. So immediately these questions must emerge into your mind and then answer every of them, and you got UPSC. Let's see how. Well, number, what is this? Why it has been brought? T-cell acute lymphoblastic leukemia cancer. Such a big name. Remember T-cell cancer. Ab dekhiye how it works. T-cell are basically your body has red blood cell, your body has white blood cell. I believe ये तो सबको पता ही होगा. White blood cell, what white blood cell does? They are your defense mechanism. ऐसे समझिए, if your body is if your body is India, then white blood cell are like army of India. They protect its border. They protect the element. They protect this country from element of dissent or element of aggression, be it Pakistan, China, or internal threats. That's what white blood cell does. Out of that, there is a peculiar type, T cell. It's a type of blood cell, white blood cell. What it does is it provides you protection. But what this disease, acute lymphoblastic leukemia cancer, not very important name, or you need to remember T cell cancer basically. What it is the cell, the T cell, which is supposed to protect you when they start attacking your body. That is this disease. T cell, which is a type of blood cell, white blood cell, which is to protect your body from foreign elements. But when it starts attacking your body, then it we call it T cell acute lymphoblastic leukemia cancer or T cell cancer. Simple study. T cell acute lymphoblastic cancer is rapid and progressive cancer. It is formed when T cell, which is a white blood cell, which suppose
Yes, they basically protect your healthy cells. But when they went rogue, इसे ऐसे समझिए when army carry out a coup, when army in some Pakistani army carry out a coup, so we can call Pakistani army is like a T cell cancer for Pakistan. ठीक है, इंडिया का एग्जांपल नहीं लेंगे यहाँ पे. Pakistani army is like a T cell cancer of Pakistan. Clear number? ठीक है. So it is formed when T cell turn against the body. The T cell which is supposed to protect you from the various elements, but it turns against your body and start destroying your healthy cell. That is the disease. And how we treat this is simply chemotherapy and radiation. Basically, chemotherapy and radiation, how it works. I believe आपने सबने egg तो खाया ही होगा, नहीं तो देखा होगा. What you do is when you put an egg, you crack an egg and put on oven, the heat goes. Heat is a kind of radiation. The heat that is from the burner is kind of radiation. It goes into the cells of the liquid egg, liquid content of egg, and it then coagulates. It expands. All of a sudden, the cells start to unfold themselves. That's how that liquid converts to solid. Similar kind of thing we try to do here. By using radiation therapy or chemotherapy, means chemical based therapy, what we do is we attack this T cell, try to bring them back to the real functioning, or try to eliminate them from the body. आपको समझ में आया what is T cell disease, cancer, and how it is treated? Technical, I believe बहुत से लोग नहीं होंगे technicalities. So if you could not understand even a single sentence, do ask again and again. ठीक है. So we understood two things for now. First, basics of biology. What is DNA? What is RNA? Their role and all. Then we understood what is the news about. The news about is a particular kind of cancer that is old attack. ये chemotherapy ये old है. This is what we are discussing. This chemotherapy and radiation therapy, it is the old technology. New technology भी discuss करेंगे थोड़ी देर में. So basically, this is a disease, and this is traditionally has been treated using chemotherapy, chemical-based therapy, or radiation-based therapy. That was the treatment. But now we have developed a new cancer therapy. Let's see how it works. So T cell, मैंने आपको बताया, T cell are a class of white blood cell equipped to hunt and neutralize threat to the body. ये कैसे है अभी करेंगे about the treatment. So I told you need to understand what is this. So the new method that we have is called base editing. Base, I just told you what base we have in our DNA. DNA with two bases we have, purines and pyrimidines. Yes, AGCT. Purines and pyrimidines is the grouping name. So AGCT, they are the base. So as a name say, you can guess that what we are gonna do. We are gonna edit these base. We are gonna edit AGCT. In your DNA structure, we will add them. How it works? Simply कुछ नहीं होता. We will take T cells out of the donor. We will take T cells out of the donor, usually the same patient who has some of the cells which are good and healthy. We will take them out, or we may even take, for example, bad cell, depending on. We take the T cell out of the donor, then we edit or change their AGCT, the base, and then we reintroduce this to the body. You have rooted out. Army has conducted a coup in your body. Army has conducted a coup in the country. What you will do? In all the army people are not bad. Some will be against the coup. They don't know coup has happened, but they do not feel it's a good thing. So what we will do? We will talk to those people, and we will try to make other people. अच्छा थोड़ा चलो मैं एक let me give another एक summary दे देता हूँ. Let me start with the summary. So देखो हाँ एक सेकंड तो अंतर्युद्ध सिविल वॉर होगी अब. तो बेसिकली व्हाट इट हैपेंस इज देखिए हमने थोड़ा सा समझा डीएनए में भी अंडरस्टूड दैट दिस इज हाउ यू हैव अ डीएनए. These are called helix of DNA. The way it is like this, convoluted. So D helix of DNA, it is composed of basically nucleotide, and there are two parts here. One is sugar. Nucleotide is composed of sugar plus second part is phosphate. You do not need to ponder over how they are connected because that will take you to the pure sciences. So हमें नहीं चाहिए. Understand this. It has helix, double helix. These double helix are called nucleotide, which are composed of sugar and phosphate. And this thing in between, they are known as your bases. That is purines or pyrimidine, also known as AGCT, adenine, guanine, cytosine, thymine.
This is your DNA. Another thing your body has something called as RNA. RNA is single strand. DNA is double strand. RNA is single strand. What RNA does? RNA reads your DNA. DNA is like a constitution. It's a constitution of the body. Just like you have constitution of a country, it tells about what is parliament, what is legislature. Similarly, you have a DNA which tells everything in your body about what this body should be, how it should evolve, how it should change, how it should respond. So RNA reads DNA to create protein. That's the RNA function. A protein can be numerous types, enzymes, your cells, a lot of places proteins are used. So that works proteins. Okay, this is what we understood. Then we understood a new treatment has come. There's a disease called T cell cancer, in short, or T cell acute lymphoblastic leukemia cancer, short T cell cancer. T cell are a type of white blood cell. White blood cell protects your body from foreign enemy, like the Indian army protecting India. Similarly, but some of those elements can go rogue and they can enact a coup. So similarly, here what happens? Some T cell basically in this body got bad. Rather than fighting with the enemy, they start fighting against the country. That is, they start attacking the body, destroying healthy cells. This is called the T cell cancer. To treat this, traditionally we have been using chemotherapy or radiation therapy. Say we were treating them by altering them or whatever may be the reason. This was a way of treatment, this old treatment. Now we have evolved a new cancer therapy. So we were discussing that therapy. And we have slide 2. The slide 2 is that therapy. This one. The new method that we have evolved is known as base editing. What we do is we take base. Base kaun se? A, G, C, T. That is purines and pyrimidines. In this, we added these things to create a response. We added these to create a proper response. T cells की बात करते हैं. But in this process, what we will do, rather than using radiation or chemical therapy to ask your body to respond in a manner, what we will use, we will take out a cell. We will take out T cells out of you. Then we will edit them. We will edit them. That is AG, CT, or CT. AG or CT, we will edit them, and then we will create a proper working cell, and then we will reintroduce in your body. सबको समझ में आया? This new base editing technology that has been evolved. Simply stating, clear है सबको how it works? ठीक है. तो ये तो हुआ बेसिक न्यूज का, which is not very important. तो क्वेश्चन में कम explain the base editing technology evolved in gene editing. तो उसमें आप इतना लिखेंगे, डन. इससे ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए. डू नॉट गो इन टेक्निकलिटीज, व्हाट कंपाउंड्स आर यूज्ड, हाउ दे आर कंबाइंड, नहीं चाहिए, बिकॉज़ परवाह नहीं करता. देन यू नीड टू explain the significance. Okay, how, where you can use this. Of course, as the name implies, you can use it to treat cancers, and it's a starting point. If over time, when a technology will evolve, when understanding will evolve, we can even expand this research to other fields. अब आते हैं कैसे करा, how we did all this drama. Most important, how we edited the genes, how we edited this AGCT. इसके लिए we use a technology known as CRISPR-Cas9. Very important. UPSC directly asked this question earlier also in prelims. Directly पूछा था उन्होंने, which of the following corresponds to Cas9. तो उसमें लिखे थे number of statement. You have to select the one. So understand it like this. Cas9 is the scissor, and CRISPR is the tailor. The way, for example, if I want to have a cloth, ये scarf I want to make. So the tailor who will stitch is the CRISPR, and Cas9 is a scissor used by the tailor. In science, the name of technology that is used for editing of gene is known as CRISPR. Cas9 is the molecule that is used for editing. को समझ में आया व्हाट इज CRISPR-Cas9? ठीक है. अब देखिए कैसे वर्क करता है ये. Here you have this DNA. Imagine, let's suppose this part has gone bad. It has altered somehow. Alteration can be natural or from foreign agents. Like corona ka virus got into your body and altered some cells and some elements of your body and made you behave in a manner you should not have. It altered your body. So depending upon the stimulus, maybe foreign or internal, sometimes genes में problem आ जाती है, that happens. So this element has gone bad, ये वाला. We have to remove this. What we will do in Cas9, we will use enzyme to cut here and cut here. We will take out this part.
This part is कैसे बना, ये हो गया S. Yes, this part is here now. We will replace this part from a healthy part. A healthy part will come and we will put that healthy part here. So now you have another DNA properly made and properly good, and then we will take it back again to your body. को समझ में how Cas9 work? Okay. अब इसमें थोड़ा सा we need to understand then why when we have such kind of technology, तो applications जैसे हमने बात की थी, only technology knowing is not sufficient. You need to know the significance of that technology for society and everything. That's UPSC. So what is the significance? I believe आपने सुना होगा कभी designer babies. Ever heard of designer babies? This is designer babies. What we do is you can select traits. For example, आपको चाहिए सचिन तेंदुलकर like batsman. So what you will do? You will study Sachin Tendulkar's DNA. उसके बेसिस पे you will try to जो आपका egg and sperm का जो fusion होता है. After that, what you will do? The new DNA that will be formed. उस zygote में what you will do? You will study the Sachin Tendulkar's DNA and try to replicate the exact DNA in the baby, or maybe take Sachin Tendulkar DNA elements and put in the new baby being formed. This is how designer babies are. अब क्वेश्चन आता है why we are not doing this? If we यही तो हाँ, यही मैं इस पे आने वाला था, मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था. The point that we have is why we are not doing this designer baby thing. Ethics and the thing that Abhay pointed out. There is no guarantee of skill transfer. क्योंकि there are two kind of things. One is innate, one is acquired. Cost तो चलो एक बार को मान लेते हैं government can subsidize. Imagine this, if you have designer baby, you can root out, for example, you can make human being which will eat only one chapati and can live for 10 days. Imagine army में कितनी बड़ी implication है. Rather than giving food to the army people, we can make soldiers, superhuman soldiers, by editing their genes. जैसे Superman बनाया, बिल्कुल we can do that. We can make, we can create the bodies like this by editing gene. That person will eat only 1 gram of food and he can survive for month. We can take example, जैसे हमने उसके केस में होता है आपका ये camel के केस में, camel can retain water for a long time. We can take out of that the gene from that and insert in the body. तो ये जीन एडिटिंग कर सकते हैं, पर क्यों नहीं कर रहे? When we can do this, हम पे टेक्नोलॉजी है, CRISPR Cas9 से we can do this. Then why we are not doing? First, outcome is not certain. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है that nature के लिए human life is small for nature. मान लेते हैं at most how many years you will live? 90 years, let's say average. This is nothing for nature. हाँ, इंडिया में 69 हो गई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, उसकी बात नहीं करते, मान लेते हैं 90 years you live. नेचर के लिए 90 years like a blink of an eye. Evolution problem, exact problem. You have no idea. मान लेते हैं today I create a superhuman. Maybe the addition that this addition जो मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया, maybe in future, maybe 300, 400, 1000 year down the line, who knows this gene can do what to our body? It may eradicate humanity altogether. Your life is so small to understand. It's over the century circumstances. आपको नहीं पता है कैसे इवॉल्व होने वाला है. इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ. फॉर एग्जांपल, आपने आई बिलीव आपने जुरासिक पार्क देखी है, द स्टीवन स्पीलबर्ग जुरासिक पार्क फर्स्ट वाली. जुरासिक पार्क फर्स्ट वाली नहीं देखी है? कमाल है, बड़ी गुड. उसमें देखिए दिस मूवीज आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ नॉलेज. अब अगर आप हनी सिंह की वीडियो देखोगे तो नहीं आएगी नॉलेज, बट दे आर गुड डॉक्यूमेंट्रीज मूवी व्हिच गिव्स यू अ लॉट ऑफ नॉलेज. अब आप इंस्टाग्राम पे वीडियो देखने से नॉलेज नहीं आती, बट मूवीज से आती है. तो उसमें देखिए एक चीज होती है, उसमें देयर इज अ पर्टिकुलर इंसिडेंट. देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ दिस. मैं पहले और दूसरे पार्ट की बात करता हूँ. नहीं, कभी फ्री टाइम मिले तो एजुकेशनल मूवी देखने में कोई प्रॉब्लम. देखिए इसमें पार्ट 1 है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप बेटर समझेंगे. What happened part 1 में they create dinosaurs. तो डायनासोर में what they do is same theory का. They found कहते हैं mosquitoes डायनासोर के टाइम पे भी थे. So they sucked out the blood of that. So and those mosquito got into this gum वाला this क्या बोलते हैं फेविकॉल समथिंग जिसे हम पेड़ों से निकालते हैं ना, तो वहां पे they got stuck. They were intact, completely intact by nature. So what we did, we to raise
Resins में जो they got entrapped, and what we do, we took out the DNA from them. So but we had parts of it. जैसे इतना part हो गया, ये miss हो गया, ऐसे करके. So we filled this gap in that movie part 1. We filled this gap by using CRISPR-Cas9 technology. What we did is we took frog. Frog se we found some similarities there. We took this part from frog, inserted here, and created dinosaur. But there was a question there. There was a person in the evaluation team. He asked the question: how you control their population? So the scientists there answered that all are female. We keep their DNA such that no dinosaur in our park is a male. Everyone is a female. So how will they reproduce? You require 2 partners for that. Sound nice? उस समय में he said a very beautiful thing. और वही हम बात कर रहे हैं. He said that there's something called as butterfly effect. Butterfly effect. You can never predict an outcome. जैसे for example, ये आपका hand है. If I drop a droplet on your first finger, on the joint of first finger, it will go like this, मान लेते हैं. When I will drop another droplet, where it will go? Same path or different path? In your hand, I drop a droplet, it takes a certain path. If I drop another droplet, will it take the same path or a different path? Common sense कहता है same, क्योंकि भाई उसने पहला चुना है तो it must go the same, but ऐसा कभी नहीं होता. Try करना घर पे, you will try to do this. It will not, if you do not change alter, you have to keep the same elevation of the hand, same condition. One drop may take this path, other drop can take altogether another path. That's nature. Nature is not that easy for human to understand. So he said you may have thought you are controlling the population, you think you have CRISPR-Cas9 technology, you can control the outcome. But what happened in second part? In second part, what happens when those people again revisit that abandoned island of Jurassic Park? They found egg there. A question came, how come this female reproduce? जब मेल है ही नहीं तो फीमेल ने reproduce कैसे कर लिया? अब आया एलिमेंट जो फ्रॉग से दे टुक दिस पार्ट फ्रॉम अ फ्रॉग. तो ये आई थिंक 10 या 20 साल के डिस्टेंस पे है मूवी का पार्ट, मतलब इन पिक्चर में टाइमलाइन. तो फ्रॉग से द पार्ट दे टुक फ्रॉम द फ्रॉग ना, that frogs had a tendency, they can change their sex if the environment demand. So some female dinosaur turned to male in order to ensure survival of the, in order to ensure the survival of the dinosaur species. This example, second part, we find that some female become male and then had reproduction. So this is a prime example. This movie shows this intellectual debate about human capacity. इसमें बहुत अच्छा statement कहता है, God made man, man made dinosaur. So are we the God? A very ethical question he posed out. So these movies are good and nonetheless. तो सबको समझ में आ रहा है? Our life is very small. We cannot assure the outcome. We can assure the outcome, but immediate circumstances. Maybe 2000 years down the line, we have no idea the editing that we are doing can eradicate humanity altogether. क्या पता कौन सा जीन आ जाए हमारे पास. सबको समझ? This is the reason we are not doing designer babies. Apart from ethical issues, you are making babies and all. This is the real fear we have, or it's genuine fear. बताइए सबको समझ में आ गया? What is CRISPR? Why we are not doing the designer baby thing? चलिए अब ये हम बताते हैं. CRISPR is like a catchy. I told you it's like a scissor. Scientists, the way the tailor used the scissor and cut the specific part of the cloth. Similarly, we use this Cas9 molecule to cut the specific part of the DNA. हम काटते हैं, CRISPR को थोड़ा ना बताता है आपको. चलो यहाँ तक सबको समझ में आया? Try to make some sense out of it. Then I will move to the next part. चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. तो देखिए, let me summarize first. This argument is valid in the sense because आज तो आपको predictable है. मान लेते हैं we understand the environment today. So for that you created a particular gene which give you superhuman abilities. You created a DNA which give you superhuman abilities. You will eat one day and survive for example 30 days. Your body will not require food again. Or you can even, for example, but you eat a lot of food. All of the food is not processed by the body.
द वेस्ट दैट यू इमिट फ्रॉम योर बॉडी, उसमें भी बहुत से कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट होते हैं दैट अदर स्पीशीज ईट. योर वेस्ट इज सम स्पीशीज फूड. So what we can do is we can edit this DNA. By this, your body will emit nothing. It will absorb every single component for the body. मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ. अब इशू क्या आता है, मान लेते हैं 2000 year down the line, 2000 year down the line, the environment changed, or the gene part that you inserted, it triggered a response. Environment changed 2000 year down the line, and it triggered a response, and this response basically killed the being. आप समझना शुभम, why we are scared? Because we can never predict the future. Evolution में खासकर we cannot predict. इसी ऑफ कोर्स अब यही तो इशू है, हम इसलिए बड़ा संभल के कर रहे हैं. आप देखिए इंडिया में जीएम क्रॉप में जेनेटिकली मॉडिफाइड, इस तरीके से देयर डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन वी डू इन देयर जीन्स. अब उसमें वी आर वेरी कॉशियस. बहुत समय बाद वी हैव अप्रूव्ड मस्टर्ड. अभी तक कॉटन चल रहा था बिकॉज़ कॉटन वाज़ नॉन ईटेबल. ज्यादातर हम उसका उसमें क्लोथ वगैरह जो भी होता है उसमें इस्तेमाल होता है. तो कॉटन वाज़ नॉट ईटेबल, इसलिए हम उसमें इस्तेमाल कर रहे थे. वी वर नॉट यूजिंग एनीवेयर जहाँ पे आपका फूड में इस्तेमाल हो. मस्टर्ड में अब अप्रूव किया गया है. आपके यूएस में तो क्या क्रॉप में होता है आपका. इसलिए हम क्यों इतना कॉशियस है, हम क्यों व्हाई आर गोइंग वेरी स्लो? बिकॉज़ ऑफ दिस फियर. अब करना तो पड़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वी हैव टू डू समथिंग. अब ऐसा तो नहीं हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह सकते हैं. वी हैव टू ब्रिंग सम चेंजेस, वी हैव टू टेक रिस्क. ह्यूमैनिटी इज ऑल अबाउट रिस्क. आप लोग यहाँ पे आके भी तो रिस्क ले रहे हैं, क्या गारंटी है आप सबका सिलेबस निकल जाएगा? बट यू आर हियर, यू आर स्टडिंग, यू आर गिविंग योर बेस्ट. वही है जीएम मस्टर्ड. वी आर गिविंग आवर बेस्ट. अब फ्यूचर में कुछ गड़बड़ हो गया तो आप ब्लेम मत कीजिएगा आज को. वैक्सीन हर चीज रिस्क है. वो तो डरना क्या है, कोशिश तो करनी पड़ेगी. अब फ्यूचर में होगा देखेंगे, डील करेंगे फ्यूचर को. नेक्स्ट थिंग, नेचुरल इवोल्यूशन इज सस्टेनेबल बट हाँ वही ऋतिक का. यस दैट्स द टाइम से. तो यहाँ तक सबको क्लियर है. जीन एडिटिंग कंपोनेंट क्लियर है. बेसिस ऑफ बायोलॉजी, जीन एडिटिंग, कैस्पर कैस9 एंड वगैरह वगैरह. हाँ. यस माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, और डर के पहले यूपीएससी. सो आरएनए बेस्ड टेक्नोलॉजी. You have CRISPR Cas9. तो याद रखिएगा एवरीवन दैट CRISPR जो भी स्पेलिंग है, Cas9 is a gene editing technology but a DNA based. You have two another technology which are RNA based. RNA based technology. We understand what RNA does. What it does is it reads the DNA to create proteins. So RNA में you have two kind of technology. RNAi, also known as RNA interference and antisense technology. जितना मैंने आई हैव गिवन इन द नोट्स ज्यादा डिटेल मत करिएगा. सेकंड थिंग इज आरएनए इज अ जीन साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी. इट साइलेंस अ पार्ट ऑफ द जीन. RNAi is a gene silencing technology. RNAi and RNA antisense both are gene silencing technology, but RNAi use double stranded and it use single stranded. इतना ही फर्क. Keep this in mind. It use RNAi single stranded, RNA is RNAi is double stranded, RNA is single stranded. And they are RNA editing technology. So we have two technologies: DNA editing, CRISPR-Cas9. CRISPR is the name of technology. Cas9 is the protein. RNA में you have RNAi and RNA antisense. क्लियर. अब आरएनए का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? देखिए आरएनए का हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं. वी कैन यूज आरएनए फॉर बीटीसी, वी कैन यूज देम फॉर ड्रग्स क्रिएशन, इवन फॉर डायबिटीज एंड एड्स. We can use them to create extend shelf life of crop and future possible use against cancer. It means by using RNA technology, you can even deal with, for example, issue of farmer suicides. Farmer suicide क्यों होते हैं? Because a large part of, apart from loan वाला scene, a large part of produce made by farmer go waste every year because they do not have proper cold storage. सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में ये है, और lot of farmers are marginal in India. आप सबको पता है ना who are marginal farmer? Marginal farmer कौन होते हैं? Small and marginal farmer.
यस, बिल्कुल सही। हेक्टेयर, एकड़ नहीं, हेक्टेयर। Who have less than 2 hectare land, and they are very small farmers, very, very small farmers. So they do not have so much of money that they can create, for example, your big cold storage and all. So they produce, they sell, they eat. That's how it works. If there is a distance between producing and selling, so a large part of their produce go waste. Sometimes nature does that, sometimes because of our failure it happens. So imagine if I can use RNA to extend shelf life, then you can deal with the issue of the selling immediately. You can keep crop for a longer time. एक और reason आता है आपका, a large number of farmers in India produce rice and wheat because they're staple. You can keep them for longer time. They do not invest more in vegetables and all, who easily perish. वो जल्दी perish होते हैं. If we can extend their shelf life, you can keep that crop for a longer time. The farmer will shift from these to vegetables and all, basically perishable commodity. So you see these technology, this is how you have to read. Science and tech, relevance to the society. How it impact the issues that you face. जितने भी, if you write this, of course, a comprehensive and a good answer. सबको clear हुआ? We have two technology of RNA, and RNA is very useful in BT seeds, formulate drugs, shelf life, and cancer, possible future cancer. Now the question comes is why we are not using RNA? If it is so good technology, why? The reason is, first of all, only very few companies are working with these technologies. Very few companies are working with this technology, so you cannot evolve them better. Second thing, we do not have a proper targeted delivery vehicle. अब ये क्या होता है delivery vehicle? It is delivery vehicle. For example, a tablet. The tablet that you took, मान लेते हैं ऐसी tablet है. This tablet has two components. Most important is API, known as active pharmaceutical ingredient. Active pharma ingredient. This API treats your body. This goes in when you take a tablet, it is get digested in your body, and it tells to the particular cells, particular compounds in your body that what they should do. For example, your hand got cut. You take up anti-pain medicine. So what happened? Would your hand will be healed automatically? No. That medicine will do what? It will do away the pain. It cannot heal your hand. For that, you have to apply another medicine. You know, every medicine does a particular kind of work depending upon the API they have, which is a effective part. अब delivery mechanism vary. In tablet, a delivery mechanism in this form. You take from oral route, it goes in your body, get digested into blood, goes through blood and everything. अब यहाँ पे क्या है? We do not have a proper delivery mechanism for RNA for now. अच्छा, we know you are late. कोई नहीं, next स्टोरी से कर लेंगे. यहाँ पे खत्म हो गया virtually. You can watch the recorded session also later on, no issue. So clear है? RNA is good technology, but few companies are working and there is no targeted delivery. अब इस पे कोई क्वेश्चन हो तो बताइए. This was the news basically. So we have evolved a new technology in gene editing, but known as base editing methods. जिसमें we edit the base to create a new kind of cell or DNA which can basically bring changes in your body. It is like, for example, changing this text. DNA, I told you, it's like a book of your book, of your body. It's like a book of your body that tells the various part of your body what they should do in future or today. So that is exactly it. I will edit this dough using technology. I will change this dough and put all dough because I feel it will make better sense. This is how you do gene editing basically. सबको clear? Any issue for now? बताइए. Sir, I will ask a very small question. अच्छा, अब इतना सा मुझे बताइए. Everyone has to tell me. Virus, is it a living thing or non-living thing? What do you think? Ritesh is saying both. Abhay is saying both. Abhinav living, Priyashi non-living. Shivani non-living, Shubham both. Okay. दोनों है अलग की चीज. Act as living, non-living, body living. बिल्कुल सही स्वाति. Right answer. Okay. देखिए, हाँ बिल्कुल सही. ठीक है, अब लास्ट जी सबको पता है. वायरस इज समवेयर बिटवीन. इट इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग. नॉन लिविंग थिंग नेवर रेप्लिकेट. दिस पेन डज नॉट रेप्लिकेट. ऐसा नहीं होगा कल हम आएंगे इसका बीबी पेन होगा. लिविंग थिंग्स रेप्लिकेट. नॉन लिविंग थिंग्स रेप्लिकेट नहीं करती.
तो वायरस replicate, of course it is living, but it does not replicate outside the body. Why? Because virus does not have metabolism of its own. The way your body has metabolism, you're a complex organism. Virus does not have a metabolism. It requires your body. Remember, इसमें I believe आपको statement याद होगी. When coronavirus was there was a minister, I think कौन सी state का I don't remember exactly. शायद union minister था. He said that even the virus have right to life. अब ठीक है, scientifically right. But the thing is, उसने गलत टाइमिंग पे बोली थी. Timing was very wrong. People were getting killed and all. और उसके वक्त वो बोलता virus है, even virus have right to live. Basically what you are saying, देखिए virus does not care that you are getting killed. वायरस के लिए you are not nothing except a vehicle. जैसे for example, आप में से कितने लोग नॉन वेज होंगे? You eat a chicken. Do you worry that that chicken may have felt the pain? आप कुछ चबा रहे हैं, मजे में लजीज भुना चिकन खा रहे हैं आप, ठीक है, तंदूरी कबाब बनाए हुए हैं, एग खा रहे हैं, जो भी है, वो एग कभी बच्चा भी बन सकता था. The way you do not care when you are eating chicken, तो आप भी तो किल कर रहे हैं. For you that is a food. Similarly, हाँ, similarly कोरोना वायरस के लिए you are a food only. कोरोना वायरस के लिए it has no animosity with you. ऐसा नहीं है वो जानबूझ के आपको मार रहा है और आपके loved one को मारना चाहता है. For it, you are nothing. You are just a kind of food. It goes into your body, use your cell, use its metabolism to replicate itself because it wants to survive. Only thing that it is doing in your body is survival, nothing else. That exactly what nature does. अब उसने बोला तो सही था कि even virus have right to life, but timing was very wrong. उसमें काफी लोग were dying and all, तो timing गलत. सबको क्लियर है? Virus is a non-living thing. When it goes into your body, it never become living, but it use your metabolism to replicate. चलो, I believe everyone is clear. तो कोरोना वायरस पे ऐसी बातें नहीं बोलने का. इससे क्या सबक मिलता है? When you will become DM or something, सोच के बोलिएगा टाइमिंग क्या है. You may be right, but wrong timing पे you will be wrong. That's exactly is interview. Interview में it happens. You may be the world's most intellectual. In future, if you, for example, if you are UPSC, you may become the best of the novelists on earth. You may become the next George Orwell. But उस वक्त इंटरव्यू में you may say something which make the panelist appear कि आपने मतलब कहाँ से आउट के आ गए. नहीं बोलने का, बट टाइमिंग का ध्यान रखने का. ठीक है, इंटरव्यू में ये प्रॉब्लम आती है. बहुत से में आप नोटिस करेंगे द पीपल हू क्वालिफाई यूपीएससी में देखिएगा, इफ दे गिव मल्टीपल अटेम्प्ट, उनके इंटरव्यू के मार्क्स वेरी बहुत कर जाते हैं. भाई सेम पर्सन इज गिविंग मल्टीपल अटेम्प्ट, हाउ कम द मार्क्स वेरी? पर्सन बदल गया क्या? नहीं. डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आस्क्ड एंड डिपेंडिंग अपॉन द आंसर यू गिव, समटाइम इट हिट्स द स्पॉट, समटाइम इट डज नॉट हिट द स्पॉट. तो इंटरव्यू में काफी सारा ये भी काम कर जाता है. चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं. एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. अब इसको समझने के लिए रिसेंटली यू नो व्हाट हैपेंड इन योर अरुणाचल प्रदेश. तो दिस इज द इशू यू हैव लाइक दिस. दिस इज बेसिकली योर बॉर्डर. ये आपका जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है यहाँ पे, ठीक है. तो जम्मू कश्मीर में दिस पार्ट इज नोन एज अक्साई चेन, एसी. हाँ, चाइना के लॉन्डो को मारा. ओके, AC. Basically, this is Aksai chain. This line, upper line is known as upper line. This is known as Johnson line. The lower line is known as McDonald line. वो आप बर्गर खाते हैं ना, वो वाला McDonald. This वाला McMohan line. ये बर्गर सारे यहीं पे पैदा हुए थे इसलिए. ठीक है, nonetheless. देखिए, Johnson line, McDonald line, and McMohan. These are the lines. Basically, how we call them lines, depending upon the map proposal. Depending upon, जैसे for example, India Bangladesh border is known as Red Cliff line because it was a person called Radcliffe during British administration who drew this line. उसके नाम पे we call it Red Cliff line. ऐसा नहीं है कि कुछ he has relation to this line, no, because he drew this line, Red Cliff line. So Britishers tried to settle this question. The name of various administrator and statesmen, we name them different names.
हो सकता है मैकडोनल्ड में हैव मेट मनमोहन इन दिस लाइन, तो इट इज नोन एज मैकमोहन लाइन, क्या पता। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं बेसिक्स कि व्हाई वी हैव दिस बॉर्डर डिस्प्यूट्स। नंबर वन, आई बिलीव सबको पता है व्हाट इज स्टेट। नहीं, उसका भी करते एक सेकंड अभी। व्हाट इज स्टेट, प्लीज टेल मी एवरीवन। टीपीएस, टेरिटरी पॉपुलेशन, हाँ, जो भी पीएसटी है whatever, territory population with a sovereign, we understand already. In this, the component of territory largely fixed. For example, nature made one earth, we made nations, we drew boundary on a map. Those boundary does not exist in real life, we have created those boundaries, so this is fixed. Ab this concept basically, ye wala, this originated in the West. In a particular context, there was a war known as 30 years war. ये मैंने बताया, this is a very fundamental war. There was a 30-year war between two people, that is the church and the kings and the queens. Ultimately, the king and the queens became sovereign. They said, if I am ruling this territory, then I will command this. Who made you the authority over me? तो जो भी है बात चली. After this, we signed Treaty of Westphalia. Westphalia is a place. We name international treaty on the basis of place they are signed. This Treaty of Westphalia laid the foundation of modern state. As you can, this treaty is 1648. Means it will originate in 17th century. So basically, this concept of fixed territory with the population as sovereign emerged in West. Later on comes colonization. So when the British and all the European countries captured countries around the world, they took these ideas, and these ideas traveled from west to the east. The idea, especially this fixed territory wala idea, this was not a reality in the Eastern world. Eastern world, when Britishers came to our shores, we used to have empires. Mughal Empire, Maratha Empire. They used to expand and contract. The Britishers came to our shores. But when they came and captured virtually the entire country, they took extraordinary effort to settle the border. Why? Because they believed in this fixed territory. We did not. During that time, we had empire which used to expand and contract. And that is the issue here. This Indian-China border, basically, it was a buffer zone once upon a time. Historically, this zone, anyway, it was Himalayas. So, कोई rule तो वैसे ही नहीं कर सकता था इसे. This zone basically, entire zone, was basically used to be buffer zone between empires. They used to maintain buffer zone that neither you will come in this zone, now neither I will come. So majority of the dispute that we have with China is a result of historical reasons. That history may, this was sometime it was in control of China, sometime it was controlled of India, depending upon the ruler. If they had a strong ruler, they control up till here. If we had a strong ruler, we control up till there. And even Tibet में देखिए, Tibet में depend करता रहा. If there was a strong king in China, he controlled Tibet. If there was a weak king in China, Tibet basically functioned like an autonomous country, independent country more or less. So it varied depending upon the king in power. So that's why we have a historical dispute. So everyone claims this land. यहाँ तक सबको समझ में आया the philosophy, the historical reason of dispute. बड़ी जल्दी 1 घंटा हो गया नहीं लगा. Okay. So this is this. तो यहाँ तक we understand the basics. Let me repeat. Then we will do. Okay. So अब question आता है. We understand that in China, that is we have like this. The McMahon line पे dispute is going on. We recognize McMahon line, which is the current border of Arunachal Pradesh. They call this land as South Tibet or Southern Tibet.
What they say that once upon a time, I think 6 or 7 something, Dalai Lama was born here. What is Dalai Lama? It may come to your mind. Dalai Lama. This person used to be a religious head. The way you have Pope in Christianity and Caliphate, Khalifa जैसे हिंदी में कहते हैं in Islam, he used to be और अभी भी है a kind of religious head in Tibet, and Tibet is a Buddhist majority. And there's a principle there that Dalai Lama never dies; he reborns. The principle that Tibet believes is Dalai Lama never dies; he reborns. This life and next life start. This life and next life and other life start. So he never dies. इतना समझिए फिलहाल. So what happens? Some Dalai Lama was born here. So basically, they argue that this part is basically South Tibet and it must be the part of China. And this part is basically Aksai Chin. तो फर्क ये है कि this part Aksai Chin is controlled by China and we claim it. Arunachal Pradesh is controlled by us and China claim it. This is the thing. Why? The question date may come why. First, we understood historical reasons. वही तो मैं समझा रहा हूँ. History does not serve everything. We understood ना modern state आप समझिए जैसे अखंड भारत का जो concept, the concept अखंड भारत is a fallacy. The China's assertion कि South China Sea is China's territory is a fallacy. ये नहीं चलेगा. You are talking about historically. आपने हो सकता है historically ऐसे तो हमने पूरे इंडोनेशिया पे कंट्रोल किया था. Chola Empire, the Chola Pandan Cheria, Southern Empire, they will control up till Indonesia. तो कल इंडोनेशिया भी हम क्लेम करेंगे कि इंडिया का टेरिटरी अखंड भारत का हिस्सा है. You get the अखंड भारत is basically an idea of अखंड stupidity based on historical justification. हर जगह पे ऐसी है. China claims same, US claims same, everyone claim historical justification. But what I was telling is modern time it does not work. Modern time we understand state by the name of a fixed territory with a population and a sovereign. बात समझ अभी ना लॉजिक तो है ही नहीं है. किसी का नहीं चलेगा. ना नेपाल का, ना हमारा, ना चाइना का. Okay, nonetheless. So what happened is they are claiming, we are saying no, 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 no. That is going on, and that's why there is incursion. Most important thing is this LAC word. It's a myth. This LAC is basically a myth. To understand that, we need to compare this LOC. LOC is the unsettled part of border between India and Pakistan. On our western side, यहाँ पे you have borders. यहाँ पे आपका for example गुजरात and all, आपका राजस्थान, पंजाब, whatever. This is settled border, and this is known as red cliff. ये भी red cliff बोला जाता है. This is red cliff line. This is settled part. यहाँ पे what you have in Jammu Kashmir में you have unsettled border. This part is known as LOC. Actually, when Pakistan, Jammu Kashmir became our part, Pakistan sent the armed forces. So India basically tried to throw them out from Jammu Kashmir. So at this place, we had our army, they had their army. It was known as ceasefire line. Initially, it was known as ceasefire line. Then in Shimla agreement, ये याद रखिएगा everyone, very, very, very important agreement. Shimla agreement is the most important among India and Pakistan. Line of control, link of control नहीं है. शिवानी, it is line of control. हाँ, line of control. ठीक है. तो शिमला अग्रीमेंट में बेसिक cool. शिमला अग्रीमेंट में basically changed the name from ceasefire line. It became LOC, line of control. अब this you need to understand. LOC is a recognized boundary between India and Pakistan, recognized by both under Shimla agreement. LAC is a myth. It is recognized nowhere. Nobody knows what is LAC, where it goes. We use it every day, even in current event, everywhere it is used. Nobody knows what is LAC. कहाँ है, किसे रहा, किसी को नहीं पता. सब बोल रहे हैं. And that is the reason China carried out incursion. It says कि LAC यहाँ है. We say LAC वहाँ. अभी बता रहा हूँ शिवानी. It says LAC is in India's side. We say LAC is in your territory. इसलिए dispute है because there is no defined LAC. शिमला agreement में LOC was defined, तो उसका कुछ नहीं कर सकते आप. LAC defined ही नहीं है, तो nobody know where is LAC, and that's why we can make any claim, they can make any claim. हाँ, that's why we have different perception. That's why we have all the disputes.
वो समझ में आया why we have a dispute on LAC? Then I will come what is LAC. ठीक है, remember this entire border of India China is LAC. It is line of actual control. Actually, this term was coined in 1959. It came from a note. A note was written by the Chinese premier Zhao Enlai. Zhao Enlai, Chinese premier, wrote a note to Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru. In that he mentioned this, that where your army is there, my army is there, line of actual control. उसको क्या पता था कि ये permanent word बन जाएगा, ठीक है? तो this concept come from there, LAC. Nobody know where this boundary is there, neither India nor China. We claim that this boundary is there, they claim this boundary is there. So that's why the dispute came on. This is what Shiv Shankar Menon, he used to be our NSA. Shiv Shankar Menon in his book Inside the Making of Foreign Policy, name is not important. Just remember, Shiv Shankar Menon has said that China described LAC only in general term, on the map, not to scale. Not to scale means on the map. If you take India China map, you can draw a boundary. This is LAC. ठीक है. But scale वाली बात होती है. If on a map, even a 1.1 you say nanometer above and 1 nanometer down, it can lead to hundreds of kilometers up and down in real life. Map is very small. So it is not to scale. वहाँ पे you can easily draw. But if you implement that on the ground, it may make hundreds of kilometers in China and may make hundreds of kilometers in India. And that's why this dispute going on. यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, it is McMahon line, South Tibet claim करते हैं वगैरह वगैरह. Nonetheless, सबको clear है what is LAC? It's a myth. It's a line once used by Chinese premier. It has been caught by the people, and since then we are calling it LAC. And LAC may be understood. There are dispute at every entire India-China border is disputed. यहाँ पे we consider this part. In Jammu Kashmir, we call this part as the international border. They call this part as the international border. In Arunachal Pradesh, we call McMahon line as the international border. They call this part as the international border. And that is a dispute going on forever. बताइए यहाँ तक कोई confusion किसी को? चलिए अब क्वेश्चन ये आता है why we are fighting over this? Why can't we have an agreement? हाँ उसी पे आ रहा हूँ भी ना, धीरे-धीरे स्टेज वाइज भी उनको ना. So the question may come is why we are fighting over this? Why can't we have an agreement? The way we have Shimla agreement over LAC, तो ऐसा कुछ बना लेते हैं LAC के ऊपर भी. हाँ मैं तो कहते हैं स्टूडेंट को चाइना को we will make our 29 नहीं 30 स्टेट, 29 स्टेट will be पाकिस्तान. नहीं 31st करेंगे, 29 पाकिस्तान, 30 बांग्लादेश एंड 31st चाइना. श्रीलंका नहीं चाहिए हमें, बहुत ट्रबलसम है, नहीं चाहिए, श्रीलंका को रहने दो. वैसे भी उसकी हालात खराब. भूटान नेपाल हमारा ही है, हम उसे बोलते नहीं है. अफेयर चल रहा है हमारा भूटान नेपाल से. हाँ ये बात भी है. चलिए so these are the lines. This is the entire dispute. Question comes is why we are not signing an agreement. एग्जैक्टली अभिनव, एरिया मैटर नहीं करता. आपके पास जो लैंड है उसे तो गवर्न कर लीजिए, वो एंड में आने वाला था पॉइंट. यू गॉट इट अर्लियर. एरिया डजंट मैटर. यू हैव 50 प्रीवियस सैटरडे वी अंडरस्टूड 50% ऑफ द वुमेन इन इंडिया आर मैनलेस. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट. और फिर यू क्लेम यू आर इन अमृतसर. द लैंड दैट यू हैव गवर्न इट बेटर फर्स्ट. आप अपने लोगों को भूख में रखे हुए हैं इन द नेम ऑफ ग्रैंड्योर. दुनिया में यू आर शोइंग दैट यू आर द सुपर पावर एंड योर 50% ऑफ योर वुमेन आर मैनलेस, 40% ऑफ योर चिल्ड्रन आर हंग्री. ऐसा अगर रिसोर्सेज से अगर पॉवर्टी खत्म होती है तो इस हिसाब से तो अफ्रीका कभी गरीब ही नहीं होता. अफ्रीका से रिसोर्स किसके पास है? कीप दिस इन माइंड. ऐसा कभी नहीं होता कि रिसोर्स इसे आई बिलीव इकोनॉमी में आपने किसी ने पढ़ा है डच डिजीज. पता नहीं आप में से कौन मेरी इकोनॉमिक्स क्लास. डच डिजीज डच डिजीज. अच्छा ठीक है. अच्छा रिसोर्स कर्ज तो पढ़ा होगा. रिसोर्स कर्ज
Actually, it is a myth. It is a myth that people think that with more resources comes better health and better you can develop your country. Wrong. It is a curse. If you have too many resources, even then the country does not. Resource curse is a kind of thing. For example, Africa is prime example. Africa has a lot of resources. This other resource किसी देश में नहीं. But still, all the African countries, more or less, except few, all countries are poor and they have very bad socio-economic indicators. अगर ऐसा होता तो socio-economic indicator साउथ कोरिया के खराब होते. अगर by not having resources you are poor, then South Korea must be more poor than us. Sri Lanka must be more poor than us, but they are better than us in all socio-economic indicators. So please remove this idea that more resources means more health and wealth. ऐसा कभी नहीं होता. Nonetheless, अब आते हैं last point पे जो मैं बात करना चाह रहा था. LAC. LAC में why China is not signing an agreement to deal with this problem? क्या China does not want peaceful neighborhood? It wants. Every country wants a peaceful neighborhood. Keep this in mind. Without having a peaceful neighborhood, you cannot be a superpower. To become a superpower, the precondition to superpower is having a peaceful neighborhood. Simple logic. आपका घर अगर शांत है तो ही दुनिया में आप peace मार खाओ. If you have a peaceful household, then you are a superman in the world. Otherwise, हाँ बिल्कुल सही है. मुझे ये बात करना था. USA. Why USA is a superpower? Because USA has peaceful neighborhood in form of Canada and Mexico. USA does not fear. USA can send 99% of its army in Afghanistan and Iraq. Because USA does not worry that someday Canada will attack me from the above or Mexico from the bottom. Most of our army gets occupied in dealing with India, Pakistan, India, China. Border पे ही वो occupy हो जाती है. जम्मू कश्मीर को deal करना है, insurgency deal करनी है, Naxalism deal करना है. So we have so much occupied our military that we are unable to do foreign adventure. So peaceful neighborhood, this is what S. Jaishankar, the current foreign minister himself said, that a peaceful neighborhood is a precondition for becoming a net security provider, or in my words, superpower. तभी आप बन सकते हो. बिना peaceful के कभी नहीं बनोगे. And that's why I always say when I teach India Pakistan, the problem that we have committed, we have used Pakistan too much for internal politics, too much. We have criticized too much of Pakistan for internal politics, for vote bank politics. We have used too much of Pakistan. Because of this, our maneuverability has been lost. Diplomacy is about shifting stand depending upon national interest. But when you demonize a neighbor for internal politics, you lose the flexibility in your policy. You have to take a rigid stand, और इस stand में किसी का फायदा नहीं. But virtually, nonetheless. चलिए लास्ट चीज कर लेते से पहले एवरीथिंग गोज डाउन. सभी आर्टिकल यहाँ पे हमारे इंटरनल डीमंस ही इतने, वो चलो बाद में देखेंगे. हाँ, बेसिकली व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक इज बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज समथिंग कॉल्ड एज तिब्बत गवर्नमेंट इन एक्साइल. And we have Dalai Lama. Why China does not settle the border? This is the reason. Because China is insecure over Tibet. If you see, if we free Tibet from China, then we do not share border with China. Actually, we share border with Tibet. China तो control करता है Tibet को. That is the only thing. We have a Tibet government in exile in Dharamshala, Himachal Pradesh. So basically, there is a government in India claiming the legitimate control of Tibet, and we have also their religious head. And this is the reason. In China is very sensitive for this. It's basically the argument presented by scholars is, and Tibet is the core of India-China dispute. कोई नाम नहीं लेता. Nobody talks about Tibet as a dispute, but everyone knows. Until unless China is assured that nobody will claim Tibet, Tibet is completely under China's dominance, and there is no foreign claim. Then only China will settle border. Otherwise, China will never settle border because it need a reason to fight. ना कैसे fight करेगा? You always leave something for fight in future. That's how politics works. Politics always works on fault line. Either the society have a fault line or you create a fault line intentionally to exploit it for politics. तभी तो वोट मिलते हैं. So basically what happened here is, अब इसमें क्या कर सकते हैं? What we can do is, we can make China assured that if you settle the border peacefully, we will ensure that Tibet government in exile ends in India and Dalai Lama, next Dalai Lama, will be born in China.
I told you Dalai Lama never dies. He's reborn. Or current Dalai Lama is very old anyway. So he may soon depart our this mortal world. So what we can, it may be insensitive for Tibetans who are in India who want a land. But from India's perspective, I see it could be a better stand. We can communicate unofficially to China that settle the border and you will get, we will ensure Tibetan government exile will end, the Dalai Lama institution will be end, and next Dalai Lama will be born in your country. We can communicate informally. Then they will reciprocate. Once we both agree that it's a feasible solution, then we can open official negotiation. उससे पहले हाँ वो he's a religious head there. और आफ्टर दैट हाँ यहीं पे तो है, इंडिया में है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में भी है बोथ दलाई लामा एंड तिब्बतन गवर्नमेंट इलेक्शन. और अगर चाइना अग्री नहीं करता है, चाइना डज नॉट अग्री, देन वी कैन यूज दिस. कैसे? सिंपली वी विल होल्ड तिब्बत गवर्नमेंट इलेक्शन इन इंडिया. The Election Commission of India will conduct an election of Tibet in India, and will ensure that next Dalai Lama is born in India. We should communicate to China, either accept our norm. अभी आप पे मौका है because this Dalai Lama is old, he's soon will depart this world. So you have a chance here. Settle the border, or we will make sure that there will be an election of Tibet government in India, and we will invite the entire world for this. Yes, Aditya. Dalai Lama was the prime reason. थ्रेट, अरे अबे एक होता है मार देना और एक होता है धमकी देना. फर्क समझिए. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज किलिंग एंड समथिंग कॉल्ड एज जस्ट गिविंग अ डेयरिंग. तो यहाँ पे हम डरा रहे हैं, लिटरली थोड़ा ना करा रहे हैं. और करा भी सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, देख लेंगे बाद में जो होगा. वैसे कौन सा वी हैव पीसफुल नेबर. यस एग्रीड. यस दलाई लामा इज अ वेरी गुड पर्सन. Dalai Lama is a very moralistic person, I would say. He's a highly moral person. ठीक है, गांधी ऑफ टुडे कह सकते हैं आप दलाई लामा को, नो डाउट. द करंट दलाई लामा इज वेरी गुड, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया. मेरे लिए इंडिया नेशनल इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट. उसके क्या इंटरेस्ट में मैं कह रहा हूँ, बिकॉज आई वांट इंडिया टू बी अ सुपर पावर. सुपर पावर तभी बनेगा व्हेन वी विल हैव अ पीसफुल नेबरहुड. उसके लिए वी हैव टू डू व्हाटएवर वी विल डू. इवन इफ वी हैव टू सिट विद पाकिस्तान, वी कॉल पाकिस्तान टेररिस्ट एवरी डे, बट इफ यू हैव टू सिट विद पाकिस्तान, वी विल सिट, because we want to advance India's national interest, not a party's national interest. शिवानी सर, why would Tibetan agree for heading election in India? Tibetan government in exile. अरे वो तो खुश हो जाएंगे. शिवानी don't understand. They will be happy. The Tibetan government in exile ना, वो happy हो जाएंगे to have election in India. हम invite करेंगे every Tibetan who is living around the world can participate in the election. अरे इसे Mentos life बोलते हैं. एक सिंपल लाइफ होती है, एक Mentos लाइफ होती है. ये Mentos लाइफ होगी. हु शुभम. अच्छा ये तिब्बत गवर्नमेंट इन एक्साइल, वही तो मेरा आर्गुमेंट है. अगर तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल का इलेक्शन होता है इंडिया में, चाइना फर्स्ट ऑफ ऑल गेट वेरी एंग्री. झड़पते थे ना बिना पानी के मछली. इट विल बी लाइक अ फिश विदाउट वाटर. ठीक है, उसके बाद देन वी विल यूज दिस एज अ टूल कि भाई मान जाओ. अभी आई एम सेइंग वी हैव अ चांस. बहुत तमाशा होगा, वैसे भी कम हो रहा है क्या. एटलीस्ट देखिए वंस फॉर ऑल कहानी तो खत्म होगी. एंड द थिंग वी हैव इज दलाई लामा. वी कैन कम्युनिकेट ना, वी विल होल्ड. हम नहीं कह रहे हम करवा रहे हैं. वी विल से वी विल होल्ड, accept the agreement and settle the border. You can right now, and we are guaranteeing you, if you settle the border, Tibetan का issue we will end. वही मैं कह रहा हूँ, मैनेज करना है हमें. ये सब स्कॉलर्स हैं सजेस्टेड. ये वैसे तिब्बतन वाला तो आइडिया मैं नहीं बनाता हूँ, रिस्की बट वर्दी ऑफ प्ले. तिब्बत का क्या करेंगे शिवानी. चलो नॉनदलेस इशू क्लियर है. तो दिस इज द बॉर्डर इशू. मैप पे लिख दीजिए. तो दिस इज द बॉर्डर इशू वी हैव. देयर सर्टेन सॉल्यूशन. द कोर इज द तिब्बत को सॉल्व करना है. LAC is not a line, it's an idea once used by Chinese premier in 1959. We are still talking about it. There is no definition, but is LAC where it is, where it is not. So that's the dispute going on to and fro.
बताइए सबको क्लियर है? एनी क्वेश्चन यू हैव, कुछ पूछना हो कुछ? पुट अप अ कंसर्न अबाउट व्हाट? ये जो बॉर्डर पे हो रहा है उसके लिए वी हैव ऑलवेज साइंस अ लॉट ऑफ अग्रीमेंट। एलएसी पे डिस्प्यूट है ना शिवानी, प्रॉब्लम क्या है? हम वी ऑलवेज प्रेजेंट आवर साइड। वो कहते हैं फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ से लाइन जा रही है, हम कहते हैं नहीं भाई यहाँ से जा रही है, तो कहते हैं नहीं भाई यहाँ से जा रही है, हम कहते हैं नहीं भाई यहाँ से जा रही है। जैसे द लाइन गोज फ्रॉम द इन इंडिया, वी से लाइन गोज फ्रॉम इन चाइना, देन इंडिया, देन चाइना, देन इंडिया, देन चाइना, देन इंडिया, देन चाइना। So that's what happened. They come here sometimes, we go here sometimes. It keeps on happening. और इसमें एक और चीज आप समझिएगा, इसे हम बोलते हैं प्रेशर टैक्टिक्स। एक्चुअली इसलिए साइलेंट है बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम। You do not, this government does not want to give it too much media attention. I told you, foreign policy पे I also believe media की attention नहीं होनी चाहिए, because media की too much attention on foreign policy means you will lose your option to respond. जैसे हमारा तालिबान के केस में वो सेम इशू यू विल अंडरस्टैंड यहाँ पे तालिबान के केस में। What happened in Taliban case? We kept on calling Taliban a terrorist group. और हमारी पॉलिसी क्या है पाकिस्तान में भी अंडरस्टैंड, नो टॉक्स विद टेररिज्म। हम पाकिस्तान से कहते हैं वी विल टॉक विद यू द डे यू विल स्टॉप टेररिज्म। तालिबान इज अ टेररिस्ट ग्रुप। सो इंडियन गवर्नमेंट वाज इन अ प्रॉब्लम, हाउ वी कैन टॉक विद दिस टेररिस्ट। इसे हम बोलते हैं ना, एक टर्म बोलते हैं स्ट्रॉन्गमैन डिलेमा। और इंटरनेशनल रिलेशन में स्ट्रॉन्गमैन डिलेमा इज अ वेरी डेंजरस थिंग। नेवर यूज टू मच मीडिया अटेंशन ऑन फॉरेन इश्यूज, it will lessen your chances of a peaceful resolution. That is the point. चलो, I believe बहुत डिस्कशन हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। The central government has declared that state have the authority to pass legislation establishing UCC to address issues like succession marriage divorce. First of all, we need to understand what is personal laws. In India, I believe everyone knows Article 29 and 30 of the Constitutions. सबने पढ़े हुए हैं? Anyone without any knowledge of Article 29 and 30? इसको if you club with article like 25, say 26, 27, 28, if you club all these articles, so they basically establish India with a country of multicultural. These all articles of fundamental rights basically establish India as a country of Article 25, freedom of religion, 29, 30, rights of the minorities, basically religious and lingual minorities. So it established India as a multicultural country. Basically, if I come from 25 to 30 article, if I read all of them together, it will establish India as a multicultural country. In a multicultural country, there is nothing called as uniform, और हो भी नहीं सकता। देखिए, remember, I am अभी थोड़ी देर पहले I was a realist person. When I was talking about IR, I am a highly realist person. Morality को I keep on the back side. But when it comes to internal politics, I always keep morality on the front side because these are our own people. चाइना के साथ what you do is not my concern. तिब्बतन के साथ भी इतना नहीं है. But when it comes to Indians, it's my concern. तो वहाँ पे internal politics में morality should always be the guide to policy. In IR, you can have anything, especially realism as a guide to policy. अब आते हैं यहाँ पे. Remember this: uniformity is a threat to society. Imagine one country, one law का narrative. Very dangerous. A Tamil person does not want to speak Hindi. We will not impose Hindi on that person. हाँ, हम MCC की बात करने वाले हैं. A Tamil person does not want to speak Hindi, should not impose Hindi. India is a diverse country with rich culture, rich ideas, rich feelings. Largely diverse. For example, the current government talks about beef politics. The cow belt, the Hindi belt, or scholars call it cow belt. वहाँ पे beef is a very sinful thing. But same political party when get into northeast में a large number of tribes are beef eaters. वहाँ पे do not raise the issue of beef because they understand this. India is a diverse country. You cannot have single law everywhere. A single law everywhere means disaster for
civil war. Example, Pakistan. Pakistan, East Pakistan and West Pakistan, two parts. Both, they impose same law. They impose same religion with same language. Islam with Urdu. Bengali people said, we are Bengali. We may be Islamic, but we are Bengali. We speak Bengali. Our culture is different. Our skin is different. Our tone is different. Urdu was imposed. Imposition of uniform law in the name of single language, same language. Bangladesh was formed. You cannot, culture is very sacred for आप अपने केस में ले लीजिए. If I will tell you wear this kind of clothes, you will resist. कहेंगे सर ठीक है आप पढ़ाते हो हमें चलेगा. We hear you, बस का मतलब ये नहीं you will tell me कि मैं कपड़े क्या पहनूंगी या पहनूंगा. आप अपने पेरेंट्स को क्या बोल देते हो मेरी क्या बात है. तो basic thing is nobody controls anybody's body, anybody's mind, and anybody's identity. So one country, one law is a recipe for disaster. This is my stand clearly. This is what we call multiculturalism. India is a diverse country, and I always say India's democracy survives on India's diversity. It's not other way around. The people, for example, when a Hindi-speaking government comes, which says, yes, sir, we know. They imposed Urdu on Bengali people. Bengali people said, fine, we may be part of Pakistan, we may be part of Islam, but इसका मतलब ये नहीं, you will tell us कि what kind of food I will eat. I am a Bengali, I speak Bengali, I eat मिष्टो दही. I will not eat जो भी आप खाते हो. सीधे मुझे जो भी मिष्टो दही पता नहीं जो भी बंगाली स्वीट्स होती है, I will eat them. हाँ रसगुल्ला मुझे नाम ध्यान रखा. Thank you शिवानी. I will eat rasgulla. I will not eat whatever you eat. I may be Islamic, that's fine. तो clear है सबको? Uniform is dangerous. Uniform is literally dangerous. अब एक और चीज और everyone remember this thing that uniform is only a word. It is basically majoritarianism. इसको थोड़ा समझ लेते हैं why I'm saying this. For example, which is the biggest electoral dispute in US? Election, which is the biggest thing of debate. जैसे हमारे में होता है lot of things, Hindu, Muslim, caste and all. Which is the biggest electoral issue in US? इसको idea है कुछ? Black and white उसके अलावा black and white इतना Christianity ठीक है और gender कैसे issue बन गया? Racism. ठीक है, you are putting at almost everything. Gender to some extent अभी is getting to the point. Abortion. US में सबसे बड़े इशू में दो हैं, एक है अबॉर्शन एंड सेकंड इशू इज गन. द बिगेस्ट इशू आप यूएस पॉलिटिक्स में देखेंगे बिटवीन रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स, अबॉर्शन एंड गन. हर वक्त वो ये बात बोलते हैं. अबॉर्शन इन इंडिया देयर इज नो डिस्प्यूट ऑन अबॉर्शन. इंडिया में वी हैव सिंगल वुमन. आपको आई बिलीव मैं हमने करवाया भी है प्रीवियस करंट इवेंट में वी अंडरस्टूड दैट इन इंडिया अराउंड 24 वीक्स था, 28 था, मुझे एग्जैक्ट वीक याद नहीं आ रहे. I think 28 week है. After 28 week, a woman in India can get abortion by her choice. आप चेक कर लेना, मुझे वीक एग्जैक्ट याद नहीं, 24 है 28 है. तो इसमें हाँ रिसेंटली आई थिंक हमने few week, I think एक महीने पहले something we covered this. तो सुप्रीम कोर्ट gave a judgment in which it clearly said even an unmarried woman can have an abortion by her choice. पहले इतना पावरफुल लॉ नहीं था. Previously, if you are unmarried woman, it was very difficult to have an abortion. Problem थी इसमें. A lot of women get pregnant because young लोग होते हैं, they explore life, तो चलता है. तो young people explore life, sometimes get pregnant, and उस केस में क्या they get scared, very scared. कि दुनिया क्या बोलेगी, मम्मी क्या बोलेंगे, पापा क्या बोलेंगे. UPSC पढ़ने गए थे, got pregnant and all. So ultimately they try to achieve abortion by unsafe means, और वो बहुत dangerous हो जाता है. So for that, if something is practice, I always say you cannot eradicate a practice. For example, alcohol. Alcohol पी रहे हैं लोग. आपको देखा अभी देखना अभी a lot of people have died in Bihar. People are drinking alcohol. If you abolish alcohol, इससे पीना थोड़ा ना छोड़ देंगे. इससे what will happen? They will start drinking unsafe alcohol. At least if you have legal alcohol, then you can control the quality of alcohol. You can control who vends it. You can control who distributes it. But if you ban it, it gets underground.
Remember, fundamental principle economics का, where there is a demand, there is a supply, always. And why the crime like alcohol, while the evils like alcohol, prostitution, आपका drugs and guns, क्यों? Why they do not end? Imagine government of India so sovereign, government of USA so big government, superpower, but unable to eradicate drug issue. Drug हर दिन मिलते हैं यूएस में. Because there's a demand. There's a demand, there will be somebody sitting to provide supply. Every demand generates its unique supply. And there's a demand for these things. तो clear बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसमें क्या है, abortion. तो उसमें अच्छा था. I believe that was a good judgment. That Supreme Court also said Modi government brought a good amendment empowering every woman to get into abortion even if they are unmarried. And best thing is they do not have to give any reason except they can say they were the failure of contraceptive. Simply you can say I tried contraceptive, it did not work, I want abortion. खत्म कहानी. Nice. अब यहाँ पे देखते हैं. US में recently Supreme Court of USA ended the federal abortion power. Means the federal law of abortion was abolished. Now the state of USA individually can decide. It was a backward judgment. Imagine India is going forward by empowering its women to have abortion at their will. USA is going backward. The so-called developed country. They are going backward. We are going forward in abortion. अब मैं क्यों बता रहा हूँ इसे majoritarianism. If USA bring UCC, say for example, मान लेते हैं तो in UCC of USA, will abortion they will allow or eradicate? You tell me. In UCC, if USA brings, say for example, USA will give right to abortion, take right to abortion, eradicate. Always remember, the so-called uniform civil code is always majority will on minority, because the majority decides the law. Majority ethos, majority ideas decides the law, or every time majority is not right. We understand that from history. अगर majority right होती तो R.M. Roy सती abolish नहीं करवा पाते. R.M. Roy got sati abolished. At that point of time, people were opposing him, including his own family protested against R.M. Roy. और उन्होंने कहा नहीं, it is a bad practice. Single person and entire society. He said bad practice, it will be abolished. But now it's a common sense. You got the understanding. Something which was common sense today. Sati should not be there. It's the common sense. Nobody, I think, will support sati in the entire country. But there was a time when people used to consider it as a norm of the society. And very natural. उस समय में अगर मान लेते यूसीसी आता तो सती पार्ट होता यूसीसी का नहीं होता. If sati would have come at that point of time, तो would sati be the part of UCC? Simply stating. तो आप सबको समझ में आ रहा? So called uniform civil code is actually majority will on minority. यहाँ पे majority religious की बात नहीं कर रहा मैं. I'm talking about any majority, intellectual majority, lingual majority, gender based majority, जो भी majority हो, they always decide what minority will accept as a norm. Having done that, that's why I suggest बाकी आप पढ़ लेना notes में सब कुछ है. That's why I suggested my student MCC, a conceptualization I thought during interview process. मैं सोचा कि interview में पूछा तो what I will do. उस समय में भी this issue was hot topic. So I thought what we can do. तो उस समय में I got an idea. Why shouldn't I say MCC? MCC means minimum civil. In this, what we will do is, देखिए, it's my idea. You may agree or may not. I don't know. So MCC में what we will do is we will take evil practices from all religions. छोटा छोटा. मान लेते हैं for example इस्लाम में we will take निकाह हलाला, this burqa, this वाला जो भी है. In Hinduism we will take that घूंघट practice and this dowry practice or this female fetus है जो भी है. So we will take small evil practices of all religion and then we will club them in a uniform law. So इससे क्या फायदा होगा? That when you eradicate, इससे you will achieve your objective of eradicating all evil practices from all religion without touching their religion. इससे क्या opposition नहीं होगा. I thought a mid ground is people will not oppose the use your MCC. They will say कि भाई this practice is evil and even we cannot criticize. अब मान लीजिए निकाह हलाला पे you will say तो Islamic people जो so called मौलाना and all ठीक है जो fundamentalist है वो करेंगे उनकी हम बात ही नहीं करते. But majority of the Muslim people even they will not support निकाह हलाला. So you got the point. MCC you achieved the objective. That objective you had is कि I want to eradicate. आप देखिए यूसीसी में जितनी भी डिबेट यू विल सी इन मीडिया द रूलिंग पार्टी वो क्या बोलते हैं छूटते वो ये बोलते हैं इस्लाम में ये हो रहा है इस्लाम में वो हो रहा है
तो भाई ऐसा नहीं कि हिंदुइज्म इज सेम और ऐसा नहीं क्रिश्चियनिटी इज सेम, इन ऑल रिलीजन। क्रिश्चियनिटी में अबॉर्शन देखिए, अबॉर्शन इज इलीगल इन यूएसए मोस्ट ऑफ द स्टेट। व्हाई? बिकॉज क्रिश्चियनिटी डज नॉट अलाउ इट। देयर वाज अ इंडियन वुमन, आई थिंक प्रीवियस ईयर or few months back, she died. Why? Because she could not have, यूएस में सी वेंट, इंडियन वुमन थी, she could not have abortion in यूएस, so she had to go some मेक्सिको या कनाडा, पता नहीं कहाँ गई थी, and in the process she died to get the abortion. So so-called advanced state itni backward hai. Why? Because of Christianity. Christianity believes as soon as the egg and the sperm fuses, the life starts. And killing a fetus is like killing a human being. So it's a sin in Christianity. And for them, it is UCC. तो इसी तरह हमारा कोई नॉर्म हो सकता है. So we do not want to have it. MCC, take some bad practices out of all religion, make a uniform law of it, and eradicate them. Do not touch all the practices. इससे क्या होगा? Everyone will be happy and nobody will be angry. कुछ लोग होंगे 1-2%, we cannot satisfy everyone in same policy. वो 1-2% उनकी कोई परवाह नहीं करता. They are backward people. We don't care about them. सबको क्लियर है? What about what Pawan? One reason may be due to less young population in USA. मतलब किस चीज का? अच्छा वो abortion हटाने का नहीं भैया, वो रीजन नहीं है. क्रिश्चियनिटी रीजन है. क्रिश्चियनिटी वो, क्योंकि अभी अब इसमें फिर पूरा आईआर भी पढ़ाना पड़ जाएगा. इसमें एक्चुअली व्हाट वी आर हैविंग इज वी आर हैविंग असर्शन ऑफ रिलीजन. आप नोटिस कीजिएगा आईआर में ये इवेंट, एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट डिक्टेटर्स. आईआर में पढ़ाई जाती है दैट नाउअडेज व्हाट इज हैपनिंग इज अराउंड द वर्ल्ड द राइट विंग इज ऑन राइज. राइट विंग एवरीवेयर. यूएस में क्रिश्चियनिटी इज असर्टिंग, इंडिया में हिंदुइज्म इज असर्टिंग. आपका क्या बोलते हैं, जर्मनी में, यूके में, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड देयर इज अ राइज ऑफ राइट विंग पावर्स. अब इसमें डिटेल में वी विल डू सम टाइम लेटर, कभी मौका मिलेगा वी विल डू. सो देयर इज अ राइज ऑफ राइट विंग, और जो ये सारा ड्रामा उसी का है. जैसे इंडिया में फॉर एग्जांपल मोदी इज बोर्न एट अ वेरी राइट टाइम. अगर मोदी जी वुड हैव बोर्न इन 1960 और 70s में, इफ ही वुड बी अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, ही वुड नॉट हैव बिकम द प्राइम मिनिस्टर. He is born at the right time where there is a rise of right wing. That's why he is the prime minister. Remember, he is, हाँ, उनकी ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशन, वो तो और भी कट्टर है. रशिया का थोड़ा अलग सीन है, ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशन में बिलीव करते हैं वो. जो क्रिश्चियनिटी में बहुत से ब्रांड है, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, ये वो ये. ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया. दिस सॉल्यूशन आई हैव कंसेप्चुअलाइज. आप अग्री ना करे वो आपकी मर्जी है, बट एमसीसी आई थॉट इज अ गुड आइडिया. थोड़ा बहुत चलेगा, सबका काम हो जाएगा. बट नाउ द क्वेश्चन कम्स इज, हाँ अभी उसने कहा, हाँ काइंड ऑफ बैलेंस. सब खुश हो जाएंगे, कोई एंग्री नहीं होगा. दो तीन देयर फ्यू पीपल हु विल बी एंग्री, नोबडी केयर अबाउट. वो तो हर जगह ऑफेंड होते हैं. हम बोल देंगे वुमेन हैव द राइट टू गो समवेयर, वो ऑफेंड हो जाएंगे. हम बोलेंगे एलजीबीटी हैव द राइट टू देयर सेक्सुअलिटी, वो ऑफेंड हो जाएंगे. तो दीज आर देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑफेंडिंग पीपल्स. वो हर जगह ऑफेंड होते हैं. हाँ फूफा, यस बिल्कुल सही है फीफा. फूफा, नाराज फूफा है वो. दे आर द नाराज फूफा ऑफ द कंट्री. वो हर जगह ऑफेंड होने वाले हैं. मूवी में अगर आप हल्के से कपड़े पहन लो तो दे गेट ऑफेंड. अभी हो रहा है ना वो, आप देख रहे हैं ना कौन सा इशू चल रहा है. नाम नहीं लूंगा बिकॉज ना, मुझे भी फ्रीडम पसंद है. मैं नहीं चाहता कि नेक्स्ट सेशन हम तिहाड़ जेल से करें. हाँ वही. बेमतलब की कहानी है, क्या कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, करीना कपूर गॉट मैरिड टू सैफ अली खान, सो मच ऑफ लव जिहाद एंगल वाज पुट इन. अब इमेजिन दिस, his Saif Ali Khan's sister, that person married to a Hindu. कौन? कुणाल खेमू आई थी. तो उनको नहीं परवाह पड़ता. He married to a Hindu woman, तो his sister married to a Hindu man. तो उनके लिए चलता है सब. अब ये हर जगह ऑफेंड होके घूमते पड़ते हैं. चलो जो भी है, नॉनदलेस क्लियर है इशू. एक्चुअली शिवानी, जिसका आप नाम ले रहे हैं ना, दैट एमपी पर्टिकुलर मिनिस्टर भी है. तो देयर वाज अ, आज तक में वो पता है, ही इज बीइंग कॉल्ड एज, एक ही पे है अभी ये गोवा पे है. अदर स्टेट में इनएक्ट इन फ्यूचर. ही इज नोन एज ऑफेंड मिनिस्टर. तो वो अच्छा बोल रहे थे आज तक में, दे वर सेइंग दैट वी शुड रीनेम हिम फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ दिस टू मिनिस्टर ऑफ ऑफेंस, बिकॉज़ ही गेट ऑफेंडेड एवरी सेकंड. चलो छोड़ो, नाराज फूफा का वी कैन नॉट डू एनीथिंग. एनीवे, यू रीड एवरीथिंग हियर, डिटेल में अवेलेबल है.
देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है ना, threat to multiculturalism, communal politics, your lack of political will, fundamental rights to bullet, everything is in that thing. नहीं, उसमें अगर आपने वो गाना देखा हो तो दैट दीपिका पादुकोण हैज़ वॉर्न न्यूमरस बिकिनीज़, उसमें केवल एक ही नहीं पहनी थी, एक कलर नहीं था, नंबर ऑफ कलर्स में सक्सेशन में पहनी हुई है। इन एवरी सेकंड देयर इज़ अ चेंज ऑफ बिकिनी। उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक बिकिनी थी, उस पे इश्यू हो गया। हाँ, वो एक नंबर ऑफ बिकिनीज़ में एक बिकिनी का कलर वो था। चलिए ठीक है, ये चलता रहता है। व्हाट काइंड ऑफ रूल्स, जैसे फॉर एग्जांपल देयर विल बी यूनिफॉर्म, जैसे अभी इस्लाम में होता है, देयर इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ व्हिच आई बिलीव शैल बी लीगल। पठान मूवी आई बिलीव अभी आ रही है, नाम नहीं पता। वैसे भी आई डोंट वॉच दिस काइंड ऑफ मूवीज़। देखनी है तो अवतार देखिए, गुड मूवी है, अच्छी लग रही है। सो यू आर ऋतिक। ठीक है ऋतिक, आई कैन टेक द एग्जांपल। अच्छा, यू वॉच आमिर खान, वो देखी है अभी आई थी इसकी, आमिर खान की, क्या नाम था इसका? आई विल आंसर यू ऋतिक, जस्ट अ सेकंड। हाँ, लाल सिंह चड्ढा, हैव यू सीन दैट मूवी? इसमें एक बहुत प्यारी लाइन है। फ्लॉप थी बट दैट लाइन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आई बिलीव इन द एंटायर मूवी। उसमें देयर इज अ पर्टिकुलर लाइन दैट पर्सन आस्क्ड दैट पर्सन आमिर खान से कि भाई, आई हैव नेवर सीन यू वर्शिपिंग एवरी एनी टाइम। तो ही सेड, मेरी मम्मी कहती थी कि धर्म से मलेरिया फैलता है। Basically, his mom used to use the word malaria whenever there was a riots, चाहे हिंदू सिख रॉयट रहे हो इंदिरा गांधी के टाइम, इंदिरा गांधी के बाद, और whatever kind of riots, फिर आपके मुंबई रॉयट, तो his mother used to use the word, the malaria word, कि every religion, तो basically said I do not worship anywhere because my mother used to tell me that religion spread malaria। तो उसकी माँ उसे बताती थी ऐसे। नंदलेस एनीवे गुड मूवी। अब आते हैं रितेश के क्वेश्चन पे, कोई और बातें बाद में करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल रितेश, ऋतिक, मान लेते हैं इस्लाम में देयर इज अ प्रैक्टिस दैट दे कैन मैरी अराउंड 3 टाइम्स, 3 और 4 टाइम्स जो भी है। तो इफ वी हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड देन दिस विल बी एंडेड। नाउ देयर विल बी सिंगल मैरिज, they cannot marry more than once, but remember this, you can marry in succession, at the same time you cannot have multiple wives, but you can always marry in succession। A lot of people you see वो कितनी मैरिज करते हैं in succession, if you can afford you can marry as many times। कौन रोकता है आपको? विजय माल्या बन जाओ, जितनी चाहे शादी करो, कौन रोक लेगा? ठीक है। Nonetheless, but I believe it's good for empowerment। ये ऐसे लॉ नहीं होने चाहिए एक साथ सक्सेशन में, एक साथ मैरिज में। बट एट दिस पॉइंट एक अच्छा चीज आती है, देखिए, दिस इज ऑल्सो अ वेस्टर्न आइडिया, नॉट अगेंस्ट एनीवन, आई एम नॉट सेइंग अगेंस्ट एनीवन। कंट्रोवर्सी हो सकती है बुरखे पे, कंट्रोवर्सी कुड बी देयर, मान लीजिए बुरखा आपको आप बैन कर देंगे, तो व्हिच आई फील इज अ गुड आइडिया, बट इट कुड बी अ कंट्रोवर्शियल आइडिया। एक इसमें एक और रीजन है, एक यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस गवर्नमेंट हैज अ इमेज प्रॉब्लम। ऐसा नहीं दिस गवर्नमेंट डूज एवरीथिंग रॉन्ग, दे डू अ गुड थिंग्स, अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, बट प्रॉब्लम ये है कि इधर दिस गवर्नमेंट नो सब बुरखा इज गुड, किस सेंस में गुड है शिवानी? ये अब इसमें फिर हम फिलॉसफी में चले जाएंगे, मेंटल ऑपरेशन वाली फिलॉसफी में। एक चीज मैं आपको हमेशा कहूंगा, इफ यू रियली वांट टू check whether burqa is good or bad, have a girl in your life, or have your daughter, do not give her any religion, let her grow up till 18, फिर मैं देखता हूँ बुर्का कैसे अपना लेगी। That's a very good statement given by that person, that you give religion to your people। For example, I am wearing this kind of clothes, you are wearing some kind of clothes, a Hindu person wear this kind of clothes, a Muslim wear this kind of clothes, they are given by society, आप खुद नहीं चुनते हैं, आपको दिए जाते हैं। तो इफ फॉर एग्जांपल, इफ आई डू नॉट गिव यू सेक्स और रिलीजन, मैं आपको ना लड़की बनाता ना लड़का, और ना ही आपको हिंदू मुस्लिम, एंड आई विल ग्रो यू लाइक अ ह्यूमन बीइंग। तो उसके बाद व्हेन आई विल गिव यू दिस थिंग कि आप ये कपड़े पहनो, ये मत पहनो, आप ये कपड़े पहनो, ये मत पहनो, बिलीव मी, आप सबसे पहले फेंक दोगे, कहोगे मुझे नहीं चाहिए। यू गॉट द पॉइंट? सोसाइटी गिव्स यू, ये बुर्खा हो गया, घूंघट, हिंदुओं में जो घूंघट है,
these all are given by society, and we all know more or less all religion are male dominated. सारे मेल्स पर्सपेक्टिव से लिखे हुए हैं। क्रिश्चियनिटी मेल्स पर्सपेक्टिव से, आपका इस्लाम मेल पर्सपेक्टिव से। हिंदुइज्म में तो भी लिबर्टी है। हिंदुइज्म में इवन हाँ, मॉरल पुलिसिंग इज नाउ गॉन। गुड आइडिया। ईरान ने अपने को बचा लिया। वरना ईरानियन वुमन कर देती कांड। You can, Shivani, अब उसमें फिर philosophy में चले। Again, I am saying you have a right to choose. What I am saying is that these are given you in the childhood. पैदा होते ही आपको दे दिए गए। If I allow you to grow in adult 18 years and plus, then I give you a particular kind of clothes. You will reject it. जो आर्गुमेंट देते हैं ना कि these people have accepted this idea. For example, there was अभी जब भी बुर्का पहनने की बात आती है, there are a lot of women who come to the media say कि I am wearing burqa on my choice. No, you're not. If I make you, if for example, घूंघट वाली भी प्रैक्टिस है। वुमन जो होती है, a lot of women justify घूंघट because it's moral जो भी है। But if I grow you in a modern society up till 18 years without giving you anything, you will never accept anything. हाँ, of course. पर वही मैं कह रहा हूँ, society should not give you. If you decide to be a burqa, lingerie, जो भी as long as it is क्या होता है decent. ये नहीं कि कुछ भी पहन के चल रहे हैं तो नहीं चलेगा भाई, ठीक है? थोड़ा मतलब decent clothing है तो कुछ भी पहनिए, it's up to you. सोसाइटी न्यूसेंस भी नहीं होना चाहिए ना। चलो ठीक है, बहुत डिबेट हो गई एमसीसी वेमसीसी पे सब पे। हाँ, लॉ नहीं बताएगा आपको, सरकार नहीं बताएगी आपको कि व्हाट यू शुड बी। दैट्स सिंपली अ पॉइंट। चलिए खत्म करते हैं, बहुत हो गई। बाकी इसमें है, यू अंडरस्टैंड, आई हैव कंसेप्चुअलाइज्ड, यू कैन राइट दिस एमसीसी आर्गुमेंट डायरेक्टली इन पेपर। इट मेक अ गुड सेंस टू हैव अ बेसिक लॉ eradicating evil practices more or less, some selected practice from every religion. इससे क्या होगा, the minority will not have a feeling that they are being targeted by majority ideas, and even the majority will be happy कि these evil practices of minorities are cheap. बट क्वेश्चन फिर यही आ जाता है, तो आपको लगता है एमसीसी आएगा? अगर मान लेते हैं somebody watch this video, you think MCC will be a law? नहीं आएगा। यूसीसी आएगा, एमसीसी नहीं आएगा, because you understand why. Then how you will do politics? I told you ना, politics always take place on fault line, division in the society. If there is no division, you create one. बिना उसके कैसे पॉलिटिक्स कर लोगे? So एमसीसी से, एमसीसी is a easy solution, not very easy, but यूसीसी से बहुत अच्छा है। So people will not agree to this because this will not allow them to carry on their politics. How they will demonize a particular community? How the particular community will brand it as backward? काम नहीं करेगा ना। चलो ज्यादा नहीं बोल सकता, अदरवाइज कल का सेशन प्यार से करना पड़ेगा मुझे। एमसीसी इज मिनिमम सिविल कोड। ये मैंने सोचा यू कैन हैव एनी नेम, इफ यू हैव सम नेम यू कैन चूज। आई हैव थॉट ऑफ मिनिमम सिविल कोड, यू कैन चूज व्हाटएवर नेम यू लाइक। चलो नेक्स्ट इज सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। नॉलेज है ये, इसकी क्या कर सकते हैं? प्रियांशी, ये तो कॉमन सेंस है। यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, दैट इज कॉमन सेंस। व्हाई यूसेज इज ब्रॉट एवरी टाइम, यू नो ना। समझो, फीलिंग समझो, वर्ड्स में मत जाओ। एग्जैक्टली चलिए तो हाँ, भावनाओं पर जाओ। सोलर पावर प्रोजेक्ट, एक्चुअली देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पुशिंग एक्टिवली फॉर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। द करंट टारगेट दैट गवर्नमेंट हैज सेट इज 175 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2022। इट में रिक्वायर इन्वेस्टमेंट था। ऑफ कोर्स 175 तो नहीं, 175 तो नहीं हो पाया है। 175 तो बेसिकली नहीं हो पाया, बट nonetheless it's what a good target. इसमें you can praise current government, they have done a very good job and a marvelous job nonetheless here. So what is the report? According to the data provided by Ministry of New and Renewable Energy, just 1/4 of the approved solar target with a combined capacity of only 40 megawatt 40 gigawatts. टारगेट था 175 में से आई थिंक 100 गीगावाट वाज आउट ऑफ 175 में 100 गीगावाट वाज सोलर, ठीक है। ओनली 40 वाज अचीव, मतलब 60 गीगावाट का गैप रह गया। अरे तुम अपने आप में शुरू हो जाते हो सारे के सारे, क्या चल रहा है?
चलो 60 गीगावाट तो 60 गीगावाट 40 गीगावाट हैज बीन प्रोड्यूस्ड तो 60 गीगावाट का गैप रह गया है व्हिच ठीक है बट नॉनदलेस गवर्नमेंट इज ट्राइंग तो व्हाट इज द प्रॉब्लम सोलर प्रॉब्लम में यू कैन रीड द सब कुछ लिखा हुआ है मैं सिंपली बता देता हूं देखिए प्रॉब्लम क्या है व्हाई वी आर अनएबल टू अचीव द टारगेट वी हैड पहला एम्बिग्यूटी इन प्रोविजंस वेरिंग एंड इनइफेक्टिव रेगुलेशन नेट मीटरिंग अभी नेट मीटरिंग क्या होता है वेरी गुड आइडिया बट विल गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग टू इट विल इंस्टॉल प्रीपेड मीटर्स एक होता है पोस्टपेड एक होता है प्रीपेड प्रीपेड मीटर बट यू प्रीपेड मीटर में क्या होता है यू फर्स्ट पे द मनी जैसे द वे यू हैव प्रीपेड मोबाइल सेम you have a meter installed and then you can take anybody's connection good idea I believe abhi implement nahi hua hai under this what will happen there will be number of providers in the same area you will have a single connection but you can change the way you change sim of your mobile you can change the connection you know kabhi tata ka kabhi reliance ka jiska bhi ho तो इससे क्या होगा देयर विल बी कंपटीशन अमंग द फर्म्स टू प्रोवाइड यू द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग प्रीपेड में यू विल रिचार्ज योर मीटर मान लेते हैं यू रिचार्ज फॉर 1000 रुपीज तो 1000 रुपी का ही इलेक्ट्रिसिटी यू कैन यूज इफ यू वांट टू यूज मोर यू हैव टू रिचार्ज अगेन एंड द इलेक्ट्रिसिटी विल अगेन कंटिन्यू अब अनदर प्रोविजन हियर इज इफ यू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी जैसे फॉर एग्जांपल यू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर प्लांट्स आप सोलर पैनल यू इंस्टॉल ऑन योर रूफ ऑन योर हाउस produce electricity. It can be fed into the meter. So by using the electricity by the electricity department, it goes up. By electricity coming from your house, it will go down. So then you will get the net meter. आपको समझ में आ रहा है how net meter works? Electricity जाती है तो it goes up. Electricity go from your side to the department, it will go down. Ultimately net bill will come. Very good idea. अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इट इज करंटली नॉट वेरी रेगुलेशंस आर वीक अ लॉट ऑफ प्लेसेस में पहला नेट मीटर है नहीं सेकंड प्रॉब्लम ये आता है कि द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी हैव जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है करंट इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव जो आपकी ऑल द लाइंस दिस बिग इलेक्ट्रिसिटी लाइंस इन इंडिया दे आर बेसिकली मेड फ्रॉम वन साइडेड ट्रैफिक वो सारे के सारी लाइन वन साइडेड ट्रैफिक की बनी है फ्रॉम प्रोडक्शन टू ट्रांसमिशन टू डिस्ट्रीब्यूशन देन टू योर हाउस These lines are not made for reverse transmission. That's the biggest problem. Even if I install a prepaid meter, I cannot ensure reverse transmission. The only thing I can do is if you install solar plant, then at least your electricity bill will be less. But net metering नहीं हो पा रहा है. आपको समझ में आ रहा है? What is the biggest issue in net metering? That the reverse transmission is not possible. इसके लिए basically we have to change our entire electrical system. सारा from production to supply जितनी भी wires we have laid we have to transform the entire system पूरा का पूरा हमें चेंज करना पड़ेगा it's a very costly exercise एक ये रीजन है कि we could not achieve the solar target because otherwise it's not appealing to me बात समझ में आ रही है दूसरा प्रॉब्लम आपको समझ में आता है लैंड कॉन्स्ट्रेंट का बिग प्रोजेक्ट्स के लिए for big project there is a problem of land constraints land constraint में basically to install a plant you have to acquire a land and set up the plant bring this solar panel install that so it's a costly exercise and a lot of problematic work हाँ शिवानी रूफटॉप का क्या रूफटॉप feasible नहीं लगता रूफटॉप में इशू क्या आ रहा है पहली प्रॉब्लम आई टोल्ड यू रिवर्स इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी देयर वो है नहीं है उस पे वी आर वर्किंग करेंटली वी आर गोइंग टुवर्ड स्मार्ट ग्रिड्स करंटली गवर्नमेंट स्मार्ट ग्रिड कोशिश कर रही है वो चलेगा देखिए ऑफशोर हो आपकी विंड हो सोलर व्हाटएवर इज देयर दे आर वन साइडेड फ्रॉम प्रोडक्शन प्लेस फॉर एग्जांपल एनीवेयर टू योर हाउस रिवर्स इज नॉट अवेलेबल दैट इज व्हाट आई एम सेइंग बस मैं दिलीप लैंड इशू के नॉट बी रूफटॉप में मैं इशू बताता हूँ शिवानी रूफटॉप में देखिए लैंड वाला तो आप समझ गए इशू क्या लैंड एक्वायर करना है मेंटेन करना है और रूफटॉप में इशू क्या आ रहा है रूफटॉप में द बिगेस्ट इशू दैट वी हैव इज प्रॉब्लम इज फर्स्ट ऑफ ऑल सन इज नॉट अवेलेबल एवरी टाइम so the electricity that will come from your rooftop will be intermittent वहां पे तो we manage in plant में what we do is we have some plants and then we have batteries big batteries set up so the energy is stored there then it is transferred in a systematic manner उसमें breaks नहीं होते हैं if you have a rooftop solar plant on your roof there will be too many breaks in the electricity supply और जो current system we have it cannot tolerate breaks
इमीडिएट ब्रेक्स नहीं सह पाएगा, तो उसको हमें वर्क करना है, पहली चीज। सेकेंड थिंग यू हैव इज स्टोरेज। Currently, we do not have storage technology which can store electricity for a longer time. For example, morning में you created electricity, evening में you use the electricity. वो भी नहीं हो पा रहा है. You got that there's a lot of technical socio-economic challenges currently. Land constraint, battery storage technology, transmission infrastructure, and then this net metering issue. Then every government is involved. So these are the issues because of which the government was unable to achieve its target. बैटरी टेक्नोलॉजी वो तो मैं समझा। सेकंड प्रॉब्लम है बैटरी टेक्नोलॉजी में प्रॉपर नहीं है। करंटली वी आर इन्वेस्टिंग इन बैटरी टेक्नोलॉजी। द लिथियम बैटरीज दैट वी ऑफन यूज आपके मोबाइल फोन में है। द प्रॉब्लम ये है कि दे डू नॉट स्टोर एनर्जी लार्ज अमाउंट में लॉन्गर टाइम। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव योर फोन, इफ यू पुट योर फोन, आप स्विच ऑफ करके रख दीजिए, इवन देन ओवर टाइम योर बैटरी गो डाउन। ओवर टाइम बैटरी अपने आप खत्म होती रहती है, वो हमेशा नहीं रहती। यू थिंक आपने चार्ज कर लिया, फोन ऑफ करा, बैटरी नहीं जाएगी। अब वो न्यूक्लियर का कभी फिर करेंगे इशू। तो बात करें शिवानी, फर्स्ट बैटरी टेक्नोलॉजी पे वी आर इन्वेस्टिंग, इट विल टेक टाइम। So we do not have proper storage technology which can exist for a longer time. First thing. Second thing, cost का issue तो है ही है, उसको government can take over. Third issue is infrastructural issue, land acquisition issue, transmission issue, then your net metering issue. So because of this socio-economic and political issue, government could not achieve its target. तो क्लियर हो गया व्हाट आर द इशू। डिटेल में इसमें है नोट्स में, यू कैन रीड, बट आई हैव गिवन यू अ गुड जिस्ट। ये वो एनवायरमेंटल का इशू भी आ जाता है। गेट इंडियन बस्टर लिखा है ना मैंने, द हैबिटेट, द थिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, द हैबिटेट ऑफ गेट इंडियन बस्टर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज वाज एंडोज्ड बाय सोलर पावर प्लांट्स। अब ये इशू आता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट और एनवायरमेंट। रिमेंबर वन थिंग, a development that compromise environment is never sustainable. It may give you facility today, but tomorrow it will be a disaster. We have to balance both. इसी तरीके से we have to achieve कि development हो जाए, but environment is not too much compromise. Example में I always say, environment में you will understand there is something called as habitation fragmentation. You fragment habitats. What is the problem? Imagine there was a critical species by the name of X1, a plant species. ठीक है, not important today. Today we don't care about that plant. हमें चाहिए ही। मान लेते हैं future a new disease come, a very critical disease, जिसका कोई solution नहीं है immediate, कोरोना अचानक से आ गया। Maybe this plant that you took away in the name of your solar power project, maybe in future this species could have saved your life. So you got the point. This is the concern of environmentalists. The species that will be lost, the both flora and fauna, they may be a key to savior of humanity in future. Or even today, there are a lot of humans are not the only animal on earth. We are just like animals. There are numerous animals and numerous microorganisms who depend on these species. अगर हम उनका इस्तेमाल हम अपने लिए we are eradicating them. But remember, you eradicate a plant, you eradicate a large number of species dependent on that plant to survive. आप अकेले प्लांट को नहीं हटा रहे, you are writing your death certificate also. Future में that will become your certificate. बात क्लियर? This is the environmental concern. चलिए, तो मेजर्स क्या ले सकते हैं? इन्वेस्टमेंट इन नेट पॉलिसी, गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर आपका क्या होता है, गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट इन R&D, इन्वेस्टमेंट इन योर क्या बोलते हैं ट्रांसमिशन, देन इंसेंटिवाइजिंग द स्टेट्स एंड डीलिंग विद द पॉलिटिक्स अराउंड दिस, उन सबको डील कर सकते हो। दीज आर द मेजर्स। चलो बताइए, कोई क्वेश्चन हो किसी के माइंड में, प्लीज आस्क। कोलिजियम वाला प्रीवियस करा था हमने, प्रीवियस सैटरडे, इसलिए नहीं डाला मैंने। प्रीवियस सैटरडे वी डिड द कोलिजियम, यू वर नॉट देयर नंबर। हमने मोस्ट ऑफ द आर्टिकल जो आप देखेंगे वो हम ऑलरेडी कई बार कवर कर चुके हैं कभी ना कभी। आपका कोई मेजर इवेंट आएगा तब हम उसे फिर कवर कर लेंगे। अभी मेजर इवेंट आए थे।
अरे जहाँ चाहे लगाओ, कई जगह पे हम लगा सकते हैं। शिवानी, दिस गवर्नमेंट इज डूइंग अ वेरी गुड आइडिया। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी कनाल्स होती है ना, कनाल्स में एलनीवी दैट इज वाटर गोइंग ऑन, उसके ऊपर हमने लगा दिए, तो वो एक अच्छी जगह है। कनाल्स का पानी वैसे भी कोई यूज नहीं कर रहा था, कनाल में पानी इज गोइंग फ्रॉम द बॉटम, टॉप पे यू कैन हैव सोलर प्लांट्स। नाइस आइडिया। गुजरात में आई बिलीव some projects have been started like this. So we will find solution. Time लगेगा. All I am saying is it will take time. चलो. With that note, we shall end today's class. Nice. It was nice meeting you all. So much of interaction, so much of हंसी मजाक. I like it. Yes, you two all have a nice weekend. मिलते हैं फिर next Saturday. Bye bye everyone.